Video got disconnected, perhaps because of network problem or etc. Let us well, so we have this craving for control over compact with complicity in connivance at descent from. Okay, क्या आपको आवाज़ क्लियर है प्लीज़? ठीक है यार, thank you very much. Perhaps a network problem, it got disconnected. So complicity in and dissent from desire for somebody something or disagree to somebody something. Okay, he's a disgrace. Sorry, disgraced. He is a disgrace to his parents. ये अपने वालिदैन के लिए एक तौहीन है. Disgraced. डिसटेस्ट, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती, देन यू से दैट डिसटेस्ट हो गया. सम स्टूडेंट्स हैव अ डिसटेस्ट फॉर मैथमेटिक्स. कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स से जो के लिए जो नो डिसटेस्ट होती है, दे डोंट लाइक इट. ड्रॉबैक्स ऑफ या टू समथिंग, किसी चीज़ की जो खामियां होती हैं. स्टीम फॉर, ही हैज़ अ ग्रेट स्टीम फॉर हिज टीचर, उसको अपने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है. स्टीम फॉर ग्रेट टीचर, स्टीम फॉर हिज टीचर. इमानेंस इन, डॉक्टर सलाम हैज़ अचीव्ड ग्रेट इमानेंस इन फिज़िक्स. शोहरत, इमानेंस मीन्स शोहरत. इंक्रोचमेंट, किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करना. अ बिजी मैन डजंट लाइक इंक्रोचमेंट ऑन हिज टाइम. देयर इज इंक्रोचमेंट ऑन रोड्स एट्सेट्रा. इंक्रोचमेंट. एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन से मुराद है वो चीज़ जो कहते हैं कि ये रूल होता है लेकिन उसमें ये चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं, मकसद वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती, तो उनको वहाँ से मावरा करार दे देना. मावरा का मतलब है कि उस चीज़ को वहाँ से जो है ना बरी करार दे देना. दैट इज़ एक्सेप्शन, मावरा. दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, कि ये इस रूल की एक्सेप्शन है. ठीक है. एवेयन ऑफ, एवेयन होता है कि जानबूझकर किसी चीज़ को टाला जाए. कानून को एवेड करना, टैक्स को एवेड करना, किसी के क्वेश्चन को एवेड करना. वी यूज वर्ड एवेड. ओके, सो दिस इज एवेड. एवेड टू, एवेयन टू. एक्सपोयर, एक्सपोयर होता है जब आपको किसी चीज़ को का मौका मिलता है उस चीज़ को समझने का, देखने का, देन यू यूज वर्ड एक्सपोयर टू. एक्सपोयर टू चिल्स एंड कोल्ड्स मे प्रूव हार्मफुल टू हेल्थ. ओके, एक्सपोजर टू चिल्स एंड कोल्ड्स, अगर आपको सर्दी का सामना हुआ या जब आपको अच्छे लोगों में अच्छे मौके मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है, तो आप जो है ना वो आप में चेंज आ जाता है. दिस इज एक्सपोजर टू. एंड देन वी हैव दिस व्हाट वी कॉल आफ्टर एक्सपोजर, यस, फेमिलियरिटी. फेमिलियरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जो आपकी जान पहचान है. फेमिलियरिटी विद, फ्रीडम फ्रॉम. Okay, gratitude to and for. The boy showed gratitude to the lady for the present. किसी बंदे के लिए आपको जो होता है तो gratitude to होता है, और किसी चीज़ के लिए होता है तो gratitude for होता है. I show my gratitude to you. I show my gratitude for your comments. So for something and to somebody. Glance at, किसी चीज़ पे एक झलक नज़र डालना. दिस इज ग्लैंस एट. या हेटेड ऑफ एंड फॉर. ऑल सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैव अ हेटेड ऑफ क्रूलिटी. तमाम महज़ब लोगों को नफ़रत होती है जो है ना वो किसी के साथ, जानवरों के साथ जुल्म करने से नफ़रत होती है. हेटेड ऑफ क्रूलिटी. हेटेड फॉर, Iago's hatred for Othello led to Desdemona's death.
यागो ये शेक्सपियर का किरदार है और उसकी असल में अथेलो से नफ़रत होती है, लेकिन वो नफ़रत का फ़ायदा और जो ना जो नुकसान होता है वो अथेलो की जो बीवी होती है डेस्डेमोना, उसी को जो ना की मौत में जो होते हैं। तो दिस इज़ हेटेड फॉर हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब है कोई रुकावट डालना। द कास्ट सिस्टम हैज़ बीन अ ग्रेट हिंड्रेंस टू सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। पुराने ज़माने में वो जो ज़ात पात का जो फ़र्क था कि ये ब्राह्मण हैं, ये कश्तरी हैं, ये वैश्य हैं, ये शूदर हैं, तो दैट इट वाज ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट। एयर का मतलब होता है वारिस, कोई जो किसका वारिस होता है वी यूज वर्ड एयर टू। शमीम इज़ एयर टू हिज ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी, वो उसकी वारिस है। एयर टू इंसेंटिव टू इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, ओके, किसी चीज़ के लिए आपके पास जो इंसेंटिव्स होते हैं, आपका किसी चीज़ की तरफ जो झुकाव है, रगबत है, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स, ओके। इंडल्जेंस इन, ऊपर इंडल्ज मैंने वह बताया था, ये इंडल्जेंस उसका नाउन है। इंडल्जेंस इन इन्फ्लुएंस ओवर आर विद, हैव यू एनी इन्फ्लुएंस ओवर विद मैनेजर, आपका उसके साथ कोई इन्फ्लुएंस है या आपका उसके साथ कोई वास्ता है। इंक्वायरी इनटू आर इंसाइट इनटू, की टू, लाइकिंग, पसंद करना। एन अपराइट मैन हैज़ नो लाइकिंग फॉर फ्लैटरी, जो अच्छा इंसान होता है ना, अपराइट जो होता है, ही हैज़ नो लाइकिंग, उसको कोई जो ना फ्लैटरी क्या होती है, फ्लैटरी होती है किसी के बेजा तारीफ़ करना, उसको कभी भी फ्लैटरी से कोई लाइकिंग नहीं होती, पसंदीदगी नहीं होती। ही हैज़ नो लाइकिंग फॉर फ्लैटरी। लिमिट, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरी मैन्स पेशेंस, यहाँ पे हर बंदे की बर्दाश्त की एक हद होती है, लिमिट। लस्ट फॉर, किसी चीज़ के लिए जो शौक़ होता है, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर गोल्ड। मैलिस अगेंस्ट, मैलिस होता है कि किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, दिल में बुराई रखना। टू चेरिश मैलिस अगेंस्ट अ पर्सन इज़ अ साइन ऑफ स्पाइटफुल नेचर, किसी के लिए बुग़्ज़ रखना ये एक नफ़रत वाले बेकार इंसान की जो निशानी होती है, दैट अ पर्सन ऑफ साइन ऑफ स्पाइटफुल नेचर। ओके, मीनस टू हम यूज़ करते हैं, मीनस टू के मतलब है ख़तरा। The increase of mosquitoes is a menace to public health. Menace to is a danger to. Menace to is a great menace. Match for, never for, nerve for. Nerve होता है किसी चीज़ के लिए जो आपकी में जो सलाहियत होती है, जो आपके अंदर एक कुव्वत होती है। Many learned men have no nerve for public speaking. बहुत से जो है ना पढ़े लिखे लोग, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के लिए उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती। पेशेंस फॉर, पिटी फॉर, प्रीटेक्स्ट फॉर, प्रूफ ऑफ, क्वारल विद, डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ गिल्ट। क्वारल विद किसके साथ लड़ाई होना, क्वारल विद। और हियर यू से दैट क्वारल बिटवीन ए एंड बी, ओके। आई हैव ही हैड अ क्वारल विद अली, there is a quarrel between Ali and Aslam, there is a quarrel about property, over property, this is how you use, okay. Regard for, regret for, I have a great regret for what I have done, मैंने जो किया मुझे उस पर ज़्यादा पछता है। I have a great regard for him, मेरे पास उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। Reason for, do you have any reason for coming late, देर के आने का कोई सबब है। Reason for, resemblance with, किसी के साथ जो होती है कि दैट इज अ रिजेम्बलेंस टू समबडी आर बिटवीन ए एंड बी, ओके। रिजेम्बलेंस टू समबडी आर बिटवीन ए एंड बी। रिलायंस ऑन, ओके, आई हैव अ वेरी लिटिल रिलायंस ऑन हिज वर्ड्स। रिवॉल्ट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ एहतजाज करना, इनकलाब लाना। रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस। सलर ऑन समबडी समथिंग, सच अ चार्ज इज़ अ ग्रेट सलर ऑन हिज कैरेक्टर। दाग, धब्बा, ये उसके दाग, उस कैरेक्टर पे एक धब्बा है, एक दाग है, लाइक दिस, ओके। सलर ऑन। एंड देन सिंपैथी विद, आई हैव नो सिंपैथी विद हिम। टेस्ट फॉर, ही हैज़ अ नो टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। टेस्ट इन, शी हैज़ नो टेस्ट इन पिक्चर्स, पिक्चर में उसका कोई तजर्बा नहीं है, उसका कोई जो है ना वो उसको कोई उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो कोई फैसला नहीं कर सकता है। टेस्ट ऑफ, now we shall have a taste of experience of hard work,
अब टेस्ट अब हमें इसका जो है ना पता चलेगा, जायका मिलेगा। तो टेस्ट फॉर होता है किसी चीज़ के लिए आपके अंदर स्किल हो, जो ना ही इज़ नो टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, उसको उसमें कोई लगाव नहीं है। टेस्ट इन का मतलब है कि आपके अंदर उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हो। टेस्ट ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज़ के साथ आपका सामना हो। टेनेसिटी ऑफ, टेनेसिटी क्या होती है? जब आपको किसी मुश्किल चीज़ के साथ मुकाबला करना होता है, सो देन यू शो द ग्रेट टेनेसिटी। ट्रस्ट इन, यूज़ फॉर, आई हैव नो यूज़ फॉर हिम, इसके लिए मेरे पास कोई इस्तेमाल नहीं है। यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एग्जामिनिंग हिम। विक्ट्री ओवर, किसी चीज़ के ऊपर। विक्टिम टू, विटनेस ऑफ एंड फॉर। ज़ील फॉर एंड जेस्ट फॉर। सो दिस ऑल वर द नाउन। जेस्ट का मतलब ज़ील होता है जो आपके पास जज्बा होता है। हिज ज़ील फॉर सोशल रिफॉर्म इज़ अबंडेंट, अनबाउंडेड। या zest for, in his old age he has lost all the zest for his youthful enjoyment। इसी तरीके से कुछ जो है ना वो adjectives होते हैं, they follow particular preposition। अब accountable to, ठीक है, we are accountable to God। amenable means जो है ना वो the men are not amenable to reason, okay। amenable, acceptable और अमीनेबल से के ये भी मतलब होता है कि कोई चीज़ किसके आगे जो है ना वो आसानी से मुतासर हो जाए। तो जिस तरह कहते हैं ना बच्चों का ख्याल रखा करें, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। दे आर अमीनेबल टू डिजीज़, दे आर वल्नरेबल टू डिजीज़, लाइक अमीनेबल आर वल्नरेबल टू। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। एक्सेसिबल, अलाइव टू, एंक्शियस अबाउट, एंक्शियस फॉर, अवेयर ऑफ, एंग्री विद, अपार्ट फ्रॉम, एप्रोप्रिएट टू। This speech was not appropriate to the occasion। averse to का मतलब है किसी के मुखालिफ होना। averse to, blind to, careful of and about or with something, he is very much careful of। careless about or with, he is a very careless about his health। certain of, compatible with, your conduct is not compatible with the principle you uphold। compatible with, ममासलत रखना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समबडी, कोई चीज़ कहते हैं दिस स्पीच वाज क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन, कहते हैं ये इस बंदे की खासियत है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समबडी, समथिंग। कंड्यूसिव टू, रिच फूड इज़ नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ। ये कंड्यूसिव टू एक मतलब एंटी टेस्ट में भी आया था। दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू स्टडीज़, ये पढ़ाई के काबिल नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। कन्वर्सेंट विद समथिंग, किसी चीज़ को आपको अच्छा उसके बारे में जानते हो। ही इज़ अ कन्वर्सेंट विद द आर्ट ऑफ प्लीजिंग पीपल। कन्वर्सेंट विद राइटिंग ऐसे, ही इज़ अ कन्वर्सेंट विद प्लेइंग म्यूजिक। कंजीनियल टू, ऊपर कंड्यूसिव टू आया था ना, कंजीनियल टू अगेन उससे मिलता जुलता। आई एम सॉरी इफ़ माई सजेशंस आर नॉट कंजीनियल टू यू, मुनासिब होना, मौजून होना, कंजीनियल टू। कंसिस्टेंट विद, मुस्तकिल किसी के साथ। contrary to, okay, so what he did was contrary to my orders, जो उसने किया वो मेरे ऑर्डर्स के मुखालिफ था। contrary to। deaf to, the landlord is deaf to the protest। deficient in, devoid of, desirous of, he is desirous of winning this prize। look at the desirous of। destined for, detrimental, ख़तरनाक। ऊपर वर्ड आया था ना कि स्मोकिंग इज़ अ ग्रेट मैनेज टू हेल्थ। अब हम ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डिफरेंट फ्रॉम, डिसअपॉइंटेड विद, डिस्गस्टेड एट या बाय समबडी समथिंग या विद समबडी। आई वाज डिस्गस्टेड विद हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे नफ़रत हो रही थी। डिस्टिंक्ट फ्रॉम, eligible for, you are eligible for this test। endowed with, he is endowed with, अता करना, Allah has endowed you with many potential। endowed या besto भी लगाते हैं, besto उसके साथ भी with preposition लगता है। envious of, किसी से जो है ना वो envy करना, लालच करना। equal to, favorable to, for somebody something, favorable to। familiar to somebody something, he is very familiar to somebody, किसी के साथ जो ना। फिट फॉर, फॉरेन टू, ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर रिस्पेक्ट। गुड एट, ओके,
and bad at, hostile to या towards. Teachers, so many teachers are hostile to students. Hostile, वो उसमें उससे तलख लहजे में बात करते हैं या उनको प्रॉपर जो है ना वो टेंशन नहीं देते. Ignorant, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना. Incumbent on या upon, he is incumbent on everybody to serve his country. It's incumbent means it's लाजमी है, ये हर बंदे पे लाजमी है. It is incumbent on everybody to serve his country. I am very much indebted to, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ. Indebted to somebody for something, बंदे का. I am indebted to you. I am indebted for your courtesy. For something, to somebody. Intimate with, okay. Is he intimate with the governor? क्या उसके साथ उसकी जान पहचान है? Are indicative of something. His pale face is indicative of his poor health. Indicative, जो जिस चीज़ की निशानदेही करता हो. Indifferent, किसी का मुखालिफ होना या किसी चीज़ से आपका जो है ना वो से रिलक्टेंस शो करें, उसमें इंटरेस्ट ना दे. और ही इज़ इंडिफरेंट टू बोथ प्रेज एंड ब्लेम. ओके, इन दोनों चीज़ों से इसकी नहीं बनती है, ना तारीफ से बनती है ना इल्ज़ाम से बनती है. इंडिग्नेंट एट आर अबाउट समथिंग. शी वॉज वेरी इंडिग्नेंट एट द वे शी हैड बीन ट्रीटेड. जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया उससे उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिग्निटी महसूस हुई कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली. इनोसेंट ऑफ समथिंग, इनसेंसिबल टू समथिंग. ही इज़ jealous of, liable to somebody or for something. Okay, is liable to somebody and for something. Mad at, loyal to. He is loyal to the government. I was almost mad with rage. गुस्से से जो है ना वो पागल हो जाना. Mindful of, be mindful of your promise to me. अपने वादे का को याद रखना. Mindful of. Notorious for, बदनाम. He is notorious for his violent crimes. ये क्राइम की वजह से बदनाम है. Obedient to, obligatory for somebody to do something. It is obligatory for all. Oblivious, forgetful of या to something, किसी चीज़ को भूल जाना. He is not oblivious of his past sins. ये अपने गुनाहों को भूला नहीं है. Obnoxious to, his very presence is obnoxious to me. उसकी मौजूदगी मेरे लिए जो है ना वो एक बुराई की निशानी है, ख़राबी है. Overwhelmed with, he was overwhelmed with sorrow. Overwhelmed, किसी चीज़ के असर में इन्वॉल्व हो जाना. Partial to somebody, towards somebody, किसी की तरफ जो है ना. The man is partial to his friends. किसी की हेल्प करना या किसी की फेवर में कोई डिसीजन देना. Partial to. Popular with, he is popular with his companion. He is a sportsman. Popular too. So, like proficient in or at somebody. Even proof of something. Proud of somebody and something. Relevant to somebody and something. Responsible to. Okay. So, requisites to. The university degree has become essential requisite for the entry into job. Job के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री लाजमी है. Requisite. Successful in or at doing something. Scared to, the sacred, पाक पवित्र. The Bible is sacred to the Christian. Sanguine about, sensitive to something. Short of, sick of. Okay. Synonymous with. Solicitous for. So temperate in. Be temperate in eating and drinking. खाने पीने के मामले में टेम्परेट से मुराद है कि ना तजावज़ करें, ना जो ना उसमें जो ना वो कम खाएं, मायाना रवि अख्तियार करें. Thankful, true, well versed in, tired of, uneasy about, useful to somebody, wanting in something, weary of. वेरी ऑफ का मतलब है कि चीज़ से तंग आ जाना. वांटिंग इन, ही इज वांटिंग इन ए नोबल क्वालिटीज. वांटिंग इन का मतलब होता है कमी होना. वर्दी ऑफ. ओके, एंड ही इज़ अ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट और बिकॉज ऑफ दिस सेल्फलेस स्पिरिट. ये बहुत एक छोटी लिस्ट थी जिसको मैंने डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी अगर वी विल गो दैट देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस ऑल प्रीपोजिशंस.
और इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है वो एक बहुत टेक्निकल एरिया है दैट रियली नीड्स ग्रेट एजाइलिटी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ लर्नर एंड आल्सो द टीचर। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है, और इसको समझने का बेहतर तरीक़ेकार भी यही है कि आप जो है वो इन दोनों को साथ लेकर चलें। और जिस तरह अभी आपके सामने ये पेयरिंग बनी हुई थी, इस पेयरिंग को आप देख रहे थे कि इस तरीके से किस तरह वर्ड्स के साथ इसकी पेयरिंग की गई थी। नॉक एट एंड इल विद एंड शिक ऑफ एंड एम इन एंड की टू एंड अफ्रेड ऑफ एंड फेड अप विद एंड स्पीक टू। इस तरह के पेयरिंग्स अगर आप इनकी बनाएं देन यू दे विल बी मोर इंटरेस्टिंग and you would be able to learn it a lot. Okay, so I think that today's class had been very much long and very much extensive, and we have given much time to this long list of this preposition, and we tried our level best to cover the majority of the prepositions in this one class. So it was a bit really difficult for me either to complete these all areas of a preposition, but however we did it. So today we have exceeded the limit of time. We will not cover the semantics and other area today, and now almost the greater proportions of syntax is done, and very small areas are remaining what we would cover in our next class. So thank you very much. Well, today's class was in 2 sections because of this network disconnectivity, but after all we did it. It is good, and take very much care of yours, and see you day after tomorrow. And the next class we will talk about conjunction, and then we will talk about articles and narration and other components to at least give you the basics of this language. Okay, so thank you very much for your interest and your cooperation, and I hope this course would help you and your younger brothers and sisters who are at home and who can't go to school because of this COVID-19, and they are limited in their home and they don't have this daily basis learning exposure. So in order to engage this wide range of students, we are trying our level best to bring some positive practices and involve these people in this sessions. Okay, so thank you very much. Love you all. See you day after tomorrow. Bye.